वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल सी हाउ वी कैन यूज पिवट। हम पिवट यूज करके हमारे कैलकुलेशंस वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम देख रहे हैं बाकी के जितने भी वीडियोस हमने अभी तक किया है, हमने देखा है कि we tried countif and we got some value. So in this case, let's say 57%. But then how do you validate कि 57% जो नंबर आया है वो सही है कि नहीं? So in previous videos, what we have done is, we went into raw data and we applied filters on this data, and then we said, okay, let's filter our data and find out the number. So let's take a look at the first example. अगस्त में वीक 4 में हमारा अप्रूवल रेट कितना रहा है. So the way we have validated this number is we went into raw data and we said updated month पे filter लगा के we selected August, and then we selected week. We said okay, fair enough, week 4, and then we said okay, approval कितना है, and then we took the count of this result, and this shows you 959. And let's say I'll put 959 somewhere like here, and then we said okay, 959 divided by all the applications that we actioned in the month of August in week 4. और इसका count कितना है, let's say 1682. And then what we did was we probably calculated that. So if I go and open calculator, and let me bring this calculator here, and we said 959 divided by 1682 multiplied by 100, whatever, 57.05%, 0.15%, and that matches with what this formula has given us. So it says 57.0. अगर मैं इसका decimal पढ़ाता हूँ, so it will, you see, it comes to around what we got in the calculator. So, but there is a better way to validate this formula, and this is where pivot comes into picture. So let me go back to 57, and let's see how we can validate this number using pivot. Pivot is much more like easier, and it helps us to validate the numbers a little faster. So let's go to raw data, and the way we start with pivot is we go into raw data, we select the entire data, all the table, by doing Control Shift right and Control Shift down. So that selects the entire data. And then we go to Insert, and then we say Pivot Chart, and let's say Pivot Chart and Table. And then see, it says कि तुम्हारा टेबल कहाँ पे, तुम्हारा डेटा कहाँ पे. Well, data table underscore raw data. ये कहाँ से आया? Because we selected the entire data. और आई थिंक फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में हमने देखा कि ये पूरे टेबल को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं. सो वी बेसिकली क्रिएटेड अ डायनेमिक टेबल and we called it table raw data, and that is what this pivot is picking it up. Good. So table is fine, अपना source सही है, and now it says कि ये pivot तुमको रखना कहाँ पे है. Well, हमको ये pivot डालना है एक नए वर्कशीट में. ठीक है, so ऑटोमेटिकली एक नया वर्कशीट क्रिएट होगा, and let's name this worksheet as for validation. इससे क्या होगा कि बार बार हम जब किसी फॉर्मूला के आउटपुट को वैलिडेट करने जाएंगे तो हमें रॉ डेटा में जाके फिल्टर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड सेकेंडली, जब रॉ डेटा में डेटा बड़ा हो जाएगा, फिर जब तुम रॉ डेटा को फिल्टर मारने जाओगे तो हो सकता है कि फाइल रिस्पॉन्ड ना करे, फाइल फ्रीज हो जाए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू नीड टू फिल्टर ऑन. सो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया कि पिवट में जाके वैलिडेट करो. सो दिस इज हाउ द पिवट लुक्स लाइक. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू सी ऑन द राइट हैंड साइड. You see all the columns. ये सब columns हमारे table raw data से आया है. And then at the bottom you see filters, columns, rows, values. Now what this means? This is very simple. कि तुमको row में क्या दिखाना है, columns में क्या दिखाना है, कौन से value पे sum मारना है, count मारना है, और कौन से column से filter मारना है. So let's go back to our earlier example कि week 4 में August के लिए approval rate क्या था. So let's see if we can find it here. So the first thing we need is we need say week of filter, because यहाँ पे
And then the moment you put week in the filter, you will see all this option. So let's put week 4. Okay. Then you see updated outcome. Now I'm going to put it in filter again. And let me put it here for somehow. Like for now, let me put it in rows. So हमें approval भी मिल जाएगा, decline भी मिल जाएगा, withdraw भी मिल जाएगा. So let me first show you and you will understand कि what's happening here. Columns will not worry about the columns right now. अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे week 4 में अप्रूवल के कितने काउंट है, डिक्लाइन के कितने काउंट है, विड्रॉ के कितने काउंट है चाहिए. And for the month of August, that's another thing that is missing. So we'll put updated month here, and then let's say we put August. Okay. And now we need the count of approved, decline, withdraw. So I think the best column that you can use to count is application ID. क्योंकि remember in one of the video I said कि जब हम फिल्टर मारते डेटा पे, जैसे कि रॉ डेटा में जब हमने फिल्टर मारा ये सब, तो जब काउंट करने गए तो वी शुड ऑलवेज यूज अ कॉलम दैट हैज नो नल वैल्यूज. मतलब अगर मैं ये फिल्टर मारा, लेट्स से वीक 4, let me do that again for you. So week 4, and then we select August, and then we select say approve. अब मेरे को इसका काउंट करना है, राइट? ये जो रिजल्ट आया उसका काउंट करना है. अगर मैं ये काउंट मैसेज लेके करूं, मैसेज का कॉलम लेके करूं, तो इससे कितना आ रहा है? 559. ये डेटा गलत है, इट्स नॉट 559. सो हमें काउंट उस कॉलम पे मारना होगा जो पता है कि कॉलम में ब्लैंक्स नहीं है. जैसे कि मैसेज में ब्लैंक है ना, तो वी शुड नॉट टेक दैट. सो आई थिंक द बेस्ट कॉलम इज ऑलवेज एप्लीकेशन आईडी, बिकॉज वी नो फॉर श्योर कि हर एप्लीकेशन का एक आईडी है. सो दिस विल नॉट बी ब्लैंक. सो नाउ दिस विल गिव यू 959. सो हमने एप्लीकेशन आईडी यूज करके काउंट मारा है, एंड दैट इज व्हाट वी विल डू इन आवर पिवट. तो अप्रूव का काउंट, डिक्लाइन का काउंट और विड्रॉ का काउंट लेने के लिए विल पुट एप्लीकेशन, विल ड्राई एप्लीकेशन, और आप यहाँ पे छोड़ देंगे वैल्यूज में. And then see, by default it says count of applications. Let me see if I can expand this a little bit. See, it says count of application ID, which will in turn give you the count of approve, decline, withdraw. अब मुझे पता है कि total number of applications you handled in week 4 in the month of August is 1682, जिसमें से 959 अप्रूव था. अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू, 959 डिवाइडेड बाय 1652. So you see, you get 57%. And now if I do say add 2 more decimals, you'll get 57.0. So this is much easier, right? And if I do this for decline as well, so if I do this decline, so I'll go to 224 divided by 1682. You will get that. I'll change this to percentage. And then I can do this for withdraw as well. So that divided by 1682. Change it to percentage, and you will get 30. And if I compare this with our dashboard, you will see 57, 13, and 30%. So this will make your life a lot easier. Now let me try something else as well. Let me show you columns. अगर मैं week को column में डाल देता हूँ, तो week आ जाएंगे columns में. So now this will make your life a little easier. And then if I do this 792 divided by this, and hit enter, and let's see if I can do a copy paste to 4 more times, and let's see if it helps. Nah, I don't think it helps. So you get the point. अगर मेरे को week 3 का निकालना है, I can simply do this 689 divided by 1275. अगर week and so forth. If I want to do it for week 3, so I'll do that divided by 1297. So you see, week 4 में you had, and then change it to percentage, all of this. You'll say 60% for week 1, 54 for week 2, and 54 for week 3. And similarly, I think 57 what we got for week 4. See, 57%. So this will help you to validate the numbers easily. अब इसी में मेरे को अगर validate करना है कि अलग अलग Q का क्या नंबर है, तो I can just drag and put updated Q in the filter. Similarly, I can put analyst name and put it in filter. So अगर मेरे को चाहिए अगस्त में कंज्यूमर एग्जिस्टिंग का क्या स्टैट्स रहा है. So ये obviously we'll have to do it again, but at least it will give you an idea. Let's validate a quickly one. Week 4 का validate करते quickly. So I'm going to change this to consumer existing.
Okay. And let's say it says week 4 में 63% है. So let's validate. So good validation. And I'm going to say week 4, 522 divided by 825. See, you got 63%. So using pivot not only helps you summarize your data, but it also helps you to validate the numbers or to validate your formulas. So it's always important कि जब भी अगर तुम कोई ऐसा complicated formula use कर रहे हो तो तुम्हें उसका validate output validate करना important है. Like how would you know कि 63% सही है? So it's always helpful कि या तो तुम raw data में जाके manually filter मार के numbers validate करो या तो you create such pivots which will help you validate the numbers quickly and more accurately. So this is what I wanted to show you in this video. जब आगे का videos तुम देखोगे and every time you want to validate the numbers, please make a habit of using pivot and validating your formulas. All right, I'll see you in the next video. Bye.